A very good morning, good afternoon, and good evening to all. So, this is Subhendu Das, your physics mentor. So, today we will discuss our chapter Thermodynamics, which is available in first year physics. So, this video is both for CHSE and CBSE students. So, ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେ ସାର୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଚାପ୍ଟରଟା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୋର ଭଲ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ରୋଟେସନାଲ୍ ମୋସନ୍ ବି ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରେକର୍ଡ଼ rotational motion. Okay, so in today's class we will discuss regarding the basic concepts that is involved in our thermodynamics. Okay, let's start the topic. So first thing, thermodynamics consists of two words. All of you remember. Thermodynamics includes two words, that is your thermo, another one is dynamics. Thermo means what? Thermo means heat, and dynamics means motion. So in thermodynamics, what we will discuss? In thermodynamics, we will discuss the transformation of heat into mechanical work and vice versa. That means in a line we can write thermodynamics, it is the branch of physics that deals with the transformation of heat into mechanical work done. And vice versa. Okay, so let's discuss what is thermodynamic system. I will discuss each and every concept which is meant for your board exam. Okay, so all of you kindly pay your attention. So what is thermodynamic system? Remember, there is an extremely large number of atoms or molecules confined within a fixed boundaries. Which possesses certain amount of pressure, volume and temperature. So this is called your thermodynamic system. Again you see, there is an extremely large number of atoms and molecules confined within a fixed boundaries which possesses certain amount of pressure, volume and temperature, and this is called our thermodynamic system. For example, you may think thermoflask. You read the above statement and apply this for this example. You can understand. In case of pressure cooker also, within fixed boundaries, certain amount of pressure, volume and temperature is available. Pressure cooker, okay, etc. So this is the meaning of thermodynamics and thermodynamic system. Next, you remember, thermodynamic system is categorized into three types. So next part is our
types of thermodynamic system. These are very common things in case of thermodynamics. So it is categorized into 3 groups. First is our open system. And what is this? Open system means thermodynamic system which can exchange both energy and matter with surrounding. So in short we can write which can exchange both matter and energy with the surrounding. Okay, so you may draw this simple diagram. This white color represents your thermodynamic system, that is open system suppose, and it can exchange heat and matter. Heat is a form of energy, heat and matter. Okay, this is our open system. And to understand open system, we may think about the example, a cup of tea on a table surface. Okay, very common example, cup of tea on a table surface. अरे ओपन सिस्टम कॉन्सेप्ट आम जहाँ भी पढ़ले ना तो अप्लाई कर कप ऑफ टी ऑन ए टेबल सरफेस, दैट मीन्स दिस सिस्टम कैन exchange matter and energy with the surrounding. Yes, it is happening. Next is our second is closed system. Second variety is closed system. That means in case of diagram, suppose this is our system and its top part is sealed. Okay, এটা একটা ঢক্কন আছে. Then this is our, it can exchange heat but it can't exchange the matter. So this is your closed system. Meaning বুঝিগেল. Now we can write the statement. Okay, after that you can think about the example. So in closed system what we have to write? Only energy can be exchanged with the surrounding. Only energy can be exchanged. That means, for example, we can think cup of tea covered with a plate. Same example, previous जहाँ भी example ले टिक्के modify देखो वाली. Cup of tea covered with a plate. अरे किस समय पर चा ठंडा है जीवो. But matter exchange है पर जी. No. Only energy can be exchanged with surrounding. So cup of tea जानी जो डायग्राम केंद्र ड्रॉ करा जाए. It is a very hard diagram no. बुझेला. So you may draw like this. किसी बोरिंग होगा दरकार नहीं कॉन्सेप्ट रे. Very easy concept. Okay, and this is your surface. Okay, just for relax पे मैं कर दिली, not necessary. Next third is our isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम ये बाबू गोटे स्वतंत्र मैंने गोटे स्पेशल थिंग अच्छी पाखे कौन देख सील्ड दिस सिस्टम इज सील्ड फ्रॉम एव्री साइड जानीपार डायग्राम रू सो आम कहीपर फॉर एग्जांपल यू मे थिंक अबाउट हॉट सूप इनसाइड थर्मोफ्लास्क मैंने कौन हो सूप गरम रही पार लॉन्ग टाइम पे एंड मैटर तो एक्सचेंज होनी दैट मीन्स इन आइसोलेटेड सिस्टम वी कैन राइट नीदर एनर्जी nor matter can be exchanged. Okay, finished. So this is all about our thermodynamic system and its types. Next concept is our boundary wall. Yes, very important concept. तो ना कौन केमती दिया है तो खाली ठीक से सुनो. Next is our boundary wall. Okay, yes, so let's consider
let's consider two systems A and B, thermodynamic systems A and B. देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करे तापर मैं एक्सप्लेन कर देबी. ओके दीटा वर्ड हमको मन रखार अच्छी अदरवाइज चैप्टर पढ़ा केमती बारंबार से वर्ड सब यूज हो चैप्टर रे. एमती सिंपल डायग्राम कर पारिबो तुम माने इजीली किसी डिफिकल्ट नहीं है. यस अरे वन इज अवर कंडक्टिंग वॉल अनदर वन इज नॉन कंडक्टिंग वॉल. तो थर्मोडायनामिक्स रे कंडक्टिंग वॉल को कौन स्पेशल ना दिया से विषय खाली कहब अधिक किसी भितर पढ़ाबार नहीं. ओके so one is your system A B. Yes so first जो wall टा कली orange color that is your what conducting wall. देखो conducting wall other name is diathermic wall. Okay diathermic wall. And in second figure से wall टा हमर non conducting wall and non conducting wall other name is adiabatic wall. Yes and you remember in case of conducting wall obviously wall is there means kono matter exchange hobo nahi. Okay it is impulsive for the exchange of matter but in case of conducting wall energy can be transferred. Okay and in case of non-conducting wall you remember neither energy nor matter can be transferred. Okay and 8 moment रे हमें कहि परिबा both A and B both the systems A and B are treated as an isolated system. Okay this is both are treated as an isolated system. Okay next is our thermodynamic. This is all about boundary wall. कौन कहली मैं boundary wall recall करो. One is your conducting wall another one is non-conducting wall. Other name of conducting wall is diathermic wall. Other name of non-conducting wall is adiabatic wall. And most probably we will use diathermic and adiabatic again and again. Okay in the whole chapter. Conducting non-conducting न कहि हमें diathermic adiabatic बार बार यूज करिया. Next is our thermodynamics variables or thermodynamic parameters. Yes thermodynamics variables जो हम कहली thermodynamic system जो हमें पढ़ले कौन हम कहली within confined boundaries कौन अच्छी certain amount of temperature pressure volume एगुड़ा सब कौन ये जो टर्म गुड़ा कहली these are thermodynamic variables. गोटे thermodynamic system को explain करिया पई जो quantity दरकार variable quantities बस variable means what with respect to time सेमानक वैल्यू सब vary करथबो. ओके values changes with respect to time. So हमें कहि परिबा the thermodynamic system possesses specific value of pressure, volume, temperature, internal energy, बहुत सारे क्वांटिटी अच्छी एक्सेट्रा. ओके and you remember with the help of these quantities
With the help of these quantities, thermodynamic system can be described clearly. Thermodynamic system can be explained clearly. Okay, that means ଏଠି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତାହେଲେ these pressure, volume, temperature, internal energy, all these things are called thermodynamic variables. Okay, bas. And what are its types? Types पढ़िए हमें next is its types. Very simple thing, it is of two types. One is your extensive variable, okay, another one is intensive variable. So thermodynamic variables are of two types. One is our extensive variable, another one is intensive variable. Next हमें पढ़िया कौन extensive variable. Remember, extensive variables, they depends upon the size of the system. They depends upon the size of the system. अरे बहुत इजी अच्छे तुम खाली सुनो ठीक से तोर खाली कॉपी टे भलसे नोट करदेव एगेन वन टाइम टू टाइम्स पढ़ीदे रेडी. फॉर एग्जांपल मास वॉल्यूम ओबियसली मोरी द मास अधिक स्पेस दरकार ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स वॉल्यूम जदि चेंज है वॉल्यूम जदि अधिक है ओबियसली सिस्टम साइज कौन है लार्ज है. सो दिस आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. एंड व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल्स? You remember, does not depend upon size of the system. Yes, for example, you may think pressure, temperature, density, etc. Okay. अच्छा देखो और छोटो एग्जांपल में कहूँ वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. अब ये जिनसटा है मास डेंसिटी है आम जनरल कहूँ डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. देखो थ्री थिंग्स आर देयर, थ्री वेरिएबल्स डेंसिटी मास वॉल्यूम. सो एबे मु कहली ना डेंसिटी को वेरिएबल हम को डेंसिटी इज इंटेंसिव वेरिएबल. इट इज इंटेंसिव वेरिएबल. एगेन डिस्कसन एवं मास मास और वॉल्यूम को टाइप वेरिएबल. मास इज कौन कही मास डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. सो मास इज आवर एक्सटेंसिव वेरिएबल. दिस इज एक्सटेंसिव वेरिएबल. एंड व्हाट इज अबाउट वॉल्यूम? योर वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव वेरिएबल. यस सॉरी बोला. सो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स फिनिश्ड. So up to this we have already covered what is thermodynamics and what is thermodynamic system and its types, thermodynamic variables and its types and boundary wall. Next a small portion is there, thermodynamic equation of state. Okay, thermodynamics equation of state. Yes, thermodynamics equation of state. So we know PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Okay. So now we tell what is your P. P represents your pressure. And what is V? V is your volume. And what is R? R is our रियल गैस कांस्टेंट. सब केमिस्ट्री बहुत इजीली पढ़ी तुम. देन व्हाट इज टी? टी इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अनदर पैरामीटर इज देयर. व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मोल्स. इट इज आवर नंबर ऑफ मोल्स. फिनिश्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर what thermodynamic equation of state.
बाउंड्री वाल कथा सरीगला थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन स्टार्ट फिनिश्ड देन very important portion we will discuss thermodynamic equilibrium or thermal equilibrium yes ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସବୁ ମେକାନିକାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଦେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକଲ୍ ହେଇପାରିବ କନସେପ୍ଟଟା ଓକେ ଜଷ୍ଟ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ योर थर्माल इक्विलिब्रियम another one is mechanical equilibrium ओके कौन पढ़ी आम कह थर्माल इक्विलिब्रियम रे कौन पढ़ी पढ़ा पढ़ी न तो पढ़ा थर्माल इक्विलिब्रियम द वेरिएबल्स लाइक यू रिमेंबर द वेरिएबल्स लाइक प्रेशर नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम next is your temperature all these things okay etc remains constant for an infinite times okay yes but in case of mechanical equilibrium I'm पढ़ी दीटा टाइप रे mechanical equilibrium one is your translational equilibrium what is this net force acting on the body equal to 0 or acting on the system is 0 summation of F equal to 0 another one is your rotational equilibrium in this case summation of or total torque equal to 0 yes so mu thermal equilibrium ko tik explain korchi just you see okay so next come to our explanation part explain it ପାଇଁ ଗଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ିବ ଟୋଟାଲ ରିକଲ୍ କରିପାରିବ କ'ଣ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସପୋଜ you consider two thermodynamic systems that is your A and B so let's draw the diagram actually after that I will explain you yes so here these are the boundary wall diagram ru jani sariboni कोटा को wall okay now you think जहाँ भी मुझे डायग्राम कली प्रीवियसली एमती डायग्राम कर सारी सपोज दिस इज योर थर्मोडायनामिक सिस्टम ए एंड बी यस एंड दिस इज व्हिच टाइप ऑफ वॉल दिस इज adiabatic wall कंडक्टिंग वॉल गले मोटे सिंगल लाइन ड्रॉ करी दिस इज adiabatic wall yes and let the pressure volume temperature of thermodynamic system A let it be P1 V1 and T1 and pressure volume temperature in thermodynamic system B let it be P2 V2 T2 है सो बर्तमान मुझे जहाँ भी एक्सप्लेन कर ठीक से शुण आग इजिली यू कैन राइट सो as per our figure both the systems A and B are having pressure volume temperature let it be P1 V1 T1 and P2 V2 T2 respectively means for A it is P1 V1 T1 for B P2 V2 T2 respectively for a longer period of time अरे adiabatic wall अच्छी नॉन कंडक्टिंग वाल किसी भी एक्सचेंज हो पारिबनी दैट मीन्स हियर आम कौन देखले हियर टेम्परेचर T1 इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर T2 मैटर एक्सचेंज होवार चांस नहीं वाल इज प्रेजेंट बट एनर्जी एक्सचेंज होवार चांस था केतेबेले यदि कंडक्टिंग वाल थी adiabatic wall नॉन कंडक्टिंग वाल दैट मीन्स हियर T1 इज नॉट इक्वल टू T2 हियर both
A and B are separated by an adiabatic wall. Separated by an adiabatic wall. Adiabatic wall ମାନେ ତମେ ପଢ଼ି ସାରିଛ, which implies no exchange of matter and energy. No exchange of matter and energy. So ଏମିତି ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖିବା, that means for this example we can say A and B both are in thermal equilibrium. We can say like this. In this case both A and B both are in thermal equilibrium. Okay, যদি तुम ଭିତରେ डाउट आसुଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା with the help of conducting wall, କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଭାଇ? କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ୱାଲ୍ ତ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଟର ସିନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ. ସୋ କେମିତି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା? ନାଉ ସି ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା by the help of conducting wall. Whatever you are understanding, okay, whatever you are observing, you have to put it in language. जहाँ भी देखो तो language रे describe कर दो शेष. आगु को मैथमेटिकल अच्छी लेक्चर 2 लेक्चर 3 एगुड़ा तुमको आहरी मजा लगे जदि तुम पढ़ार इच्छा थी. सपोज दिस इज योर सिस्टम ए एंड सिस्टम बी एंड रिमेंबर लेक्चर 3 4 5 रे सब कौन अच्छी मैथमेटिकल 2 3 4 5 2 रू स्टार्ट हो मैथमेटिकल. सो लेट your A is having pressure P1, volume V1, temperature T1, and B is having pressure P2, volume V2, temperature T2, and let T1 is greater than T2. Okay, let's consider. And the wall is our को वाला में कोई दिया कहली, this is our conducting wall or diathermic wall. Conducting non conducting तार अदर नेम के इजीली मन रहिबो कहबो. मन रखो CD, C for conducting, D for diathermic. Okay, so I'm describe करिए ठीक है. Let same description. Let system A is having pressure, volume and temperature, that is P1, V1, T1, and B is having P2, V2, T2. Okay, so in this figure let both systems are separated by diathermic wall. आमे एक्सप्लेन करिया थर्मल इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ डायथर्मिक वॉल. ओके, डायथर्मिक वॉल. सो तुम जानी देलो बर्तमान आज द वॉल इज डायथर्मिक, आज द वॉल इज डायथर्मिक तो सुविधा है बर्तमान एनर्जी एक्सचेंज हो पार. आज द वॉल इज डायथर्मिक एंड आज T1 इज ग्रेटर दैन T2. हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस अच्छी देखो, T1 इज ग्रेटर दैन T2. सो हीट विल एक्सचेंज. हीट कौटू कौटी फ्लो कर, हाँ, हीट विल एक्सचेंज बिटवीन A and B. ओके, सो T1 greater than T2 ର meaning କ'ଣ? So molecules of A are vibrating with more kinetic energy in comparison to molecules of B. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ତ ନୋଟ୍ କରିବା. T1 is greater than T2. What does it mean? It means love symbol meaning है comparison. Okay, it means molecules of A are having, or molecules of A are, you may write, are vibrating. Molecules of A are vibrating with more kinetic energy in comparison to molecules of B.
ओके यस सो जहाँ पे हमें देख लो एग्जाम्पल so wall is diathermic again temperature T1 is greater than T2 so heat will exchange between A and B ताले कौन कोड की heat move करियो को heat will flow from heat starts to transfer from A to B obviously higher rated body to lower rated body thus heat energy starts to transfer from A to B and को पर्यंत एमती ट्रांसफर हम अप टू व्हिच दे अटेन कांस्टेंट टेम्परेचर अप टू व्हिच दे अटेन कांस्टेंट और सेम टेम्परेचर ओके अप टू व्हिच दे अटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ये बढ़िया मन रख कौन देख लो हीट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बस सो जब कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव कले दैट मीन्स I can write when T1 is equals to T2 सही टाइम आम कौन कहीपर then A and B are said to be in thermal equilibrium okay provided that A and B are separated by which wall conducting or diathermic wall देख लो दीटा एग्जांपल कॉन्सेप्ट कौन शिख तुम मैंने जो ए एंड बी सेपरेशन अच्छा बाय द हेल्प ऑफ adiabatic wall from the beginning we can think about they are in thermal equilibrium but when they are separated with the help of diathermic or conducting wall after certain time both will attain the same temperature and ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ at that moment we can say that both are in thermal equilibrium but initially we can say they are in thermal equilibrium when they are separated by the diathermic or conducting wall so this is all about your thermal equilibrium एमती explain करियो with the help of diathermic wall and with the help of adiabatic wall and next concept is our last topic of this class lecture 1 class that is your zeroth law of thermodynamics okay so next topic is our से भी हिंदी लैंग्वेज देख एक्सप्लेन कराबो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओके so all of you remember zeroth law of thermodynamics is the fundamental law of thermodynamics एटा सब फंडामेंटल लॉ सो कौन यार स्टेटमेंट फास्ट तो स्टेटमेंट देखा लॉ मीन स्टेटमेंट पर फोकस करवा देन तार एक्सप्लेन कला तुम स्टेटमेंट भलसे बुझ सो इट स्टेट्स दैट हैंड राइटिंग जी तुमको असुविधा कर कमेंट बॉक्स रे जड़ेब जहाँ तुम प्रोब्लेम जहाँ तुम रिक्वायर कर आउ कौन अधिका तुम्हें होप अच्छी तुम मो चैनल रू ओके यू मे सजेस्ट जहाँ भूल ठीक सब सजेस्ट करें कि ना ओके सो नेक्स्ट इज हाँ इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम मीन thermodynamic systems if two thermodynamic systems are separately in thermal equilibrium with a third system then the two systems are said to be in thermal equilibrium with each other okay yes so read it. It states that if two systems are separately in thermal equilibrium with third system then the two systems are said to be in thermal equilibrium with each other.
सपोज ताको एक्सप्लेन केमती हम देख भल से बुझ हो एक्सप्लेनेशन सरला टाइम तुम जमी सब कौन डाउट सब क्लीयर हवा दरकार सो पे योर प्रॉपर अटेंशन सो आम करवा थर्मोडायनामिक सिस्टम तीन टा सिस्टम कहली यस सपोज दिस इज आवर फिगर so what I am drawing you see it first this is your thermodynamic system A thermodynamic system B thermodynamic system C बस ओके ऑरेंज कलर को टाइप रो वाल तुम तो जानी परिबनी व्हिच वाल गेस इट दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग वाल एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉन कंडक्टिंग वाल आम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर रे नॉन कंडक्टिंग टू को वाल कहितले adiabatic वाल okay so this is our adiabatic wall yes and green color line that is your diathermic wall so this is diathermic wall and orange color is our adiabatic wall okay adiabatic wall bas and let A is having pressure P1 volume V1 temperature T1 and B is having pressure P2 volume V2 temperature T2 yes तो बैकग्राउंड रे जदि भी किसी नॉइज आसुची ओके ताकू टिके अवॉइड करो यस सो बहुत बार फेल्यूर होला परे मु पुणी अगेन रिकॉर्ड करूची यस सो 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिकॉर्ड करथिली या पूर्व बट नॉइज आसला बेले ताकू कौन कली कैंसल कली सो मुझे अपलोड कर पार नथली डिले हो गला से सो चेष्टा कर वीक रे बहुत सारा लेक्चर अपलोड करवा ओके विदिन 7 डेज आम ये चैप्टर को कंप्लीट करवा ओके आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ओके सो लेट अच्छा कौन ये कॉन्सेप्ट देख तो डायथर्मिक वाल अनदर वन इज एडियाबेटिक वाल अच्छे हमर ओके दिस वाल इज आवर एडियाबेटिक वाल so ये डायग्राम रू कौन आम देखले so because of diathermic wall you remember because of diathermic wall heat will exchange between देखो तो कोडी कोडी एक्सचेंज हबो heat will exchange between A and C and B and C obviously it is true heat will exchange between देखो ठीक है भूल देखो अरे ये कंडक्टिंग वाल अच्छी heat will exchange between A and C again B और C भीतर भी हमारा कंडक्टिंग वाल अच्छी डायथर्मिक वाल so heat will exchange between A and C and B and C suppose हम भाविबा जे let after certain time temperature अरे exchange हो ना heat temperature of A B and C are T let's think heat exchange है so after certain time let temperature of all the three systems केते हो गला T हो गला yes yes ये बर्तमान आम ये डायग्राम रू तुम लिखिपर डायग्राम तले भी एमती एक्सप्लेन लिखिपर टे कौन ए एंड बी ए और बी को भलसे फोकस करो ए एंड बी इन फिगर ए एंड बी अटैच्ड टू सिस्टम सी देखो तो ए और बी सिस्टम सी सहित को वाल कनेक्ट अच्छा to system C by conducting or diathermic wall. The other name managed CD diathermic wall. Okay. Another thing is that A and B are separated by which wall? Adiabatic wall. Okay. And A and B are separated by
adiabatic wall. ओके यस फिगर एति तो देखुछे हम. अच्छा बर्तमान कोन हला ए आउ बी adiabatic तांको भीतर नो कनेक्शन किछि भी एक्सचेंज होबोनी. ए एंड सी conducting wall, B and C conducting wall. So energy will exchange. So certain time पर हम देखिले let after certain time temperature of A, B and C केते गला let it be T. So T ହେଲା ପରେ डायग्राम केमते हबो. Now हम कोन देखिले रही था. So हम कहले कोन नेक्स्ट पॉइंट रे let after certain time temperature of A, B, C are T. So यही लाइन रो डायग्राम करिवा जहाँ पे हमें कहले ना ताकू डायग्राम रे देखिबा. बर्तमान देखो सही सेम डायग्राम थिला. ओके से सेम डायग्राम ताकू कॉपी करिवा. वेट सेम डायग्राम अछि बट टेम्परेचर बर्तमान कोन हे गला सबथरा टेम्परेचर T हे जाई छी. ओके शीट yes yes. So button C is having temperature T, A is having temperature T, B is having temperature T. So it is bhalo jinsa dekhila kono. So now we can say now system A are temperature same अछि माने कोन they are in thermal equilibrium. Now we can say system A is in thermal equilibrium with C. सत कथा with system C they are having same temperature. And we can also say system B is in thermal equilibrium with system C. Okay with system C obviously. ठीक यही मोमेंट रे मु तुम गोटे काम करिया कहबी ए आउ बी भीतर जो हमर अछि कोन adiabatic wall ताको हम रिप्लेस कर दो डायथर्मिक wall. कोन कहली मु ए एंड बी भीतर हमर अछि कोन नॉन कंडक्टिंग wall और adiabatic wall ताको हम रिप्लेस करबा कोथरे कंडक्टिंग wall और डायथर्मिक wall. कोन ऑब्जर्व करिवो थोड़ी ना किसी हीट ट्रांसफर होबो. अरे बर्तमान ताकर टेम्परेचर कोन अछि सेम टेम्परेचर हे जाय ए आउ बी टी. सो एई वाल टाको जदि हम रिमूव करी गोटे कंडक्टिंग वाल पे अटैच करन दियर डायथर्मिक वाल अटैच करिबा. सो हीट विल नॉट एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी. सो हमें कोन कहबा ताले बिकॉज़ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बस. सो सिस्टम ए एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. सो सेई लाइन टाको हमें एठी अटैच करिबा. सो इन दिस केस if the wall that is adiabatic between A and B is replaced by diathermic wall, then no transfer of energy will occur from system A to system B or system B to system A. Thus, that means thus system A and B is in thermal equilibrium with each other. Okay बस जो लाइन हमरो डाउट क्रिएट होइतिला सही लाइन आसी कोन हो गेले क्लियर हो गेले. देखो एटी कोन कहइतिला कांसेप्टटा शीट इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम देन द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. बस सो फर्स्ट लाइन को सजेस्ट किए गला. देखो टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम. ऑब्वियसली ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी फर्स्ट डायग्राम
B is separately in thermal equilibrium with C. Bas se satisfy kala. Two systems are separately in thermal equilibrium with a third system. Then it point next line kon kala. Then the two systems are said to be in thermal equilibrium with each other. Bas jodi A C ସହିତ equilibrium ରେ ଅଛି, B C ସହିତ ବି କ'ଣ ଅଛି thermal equilibrium. If A is in thermal equilibrium with C, B is in thermal equilibrium with C separately, then A and B both are in thermal equilibrium with each other. Okay, this is all about our zeroth law of thermodynamics. So this is all about for today's class. Thank you. Have a nice day. Next lecture रे में मैथमेटिकल पार्ट को धीरे धीरे कवर करिया. ओके, थैंक यू.